हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल डेटा डिकोड विद प्रिया। आज हम सीखने वाले हैं टॉप 5 एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर डेटा एनालिस्ट। दीज आर द क्वेश्चंस जो मुझे मेरे इंटरव्यूज में पूछे गए थे। लाइक माय दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस व्हिच आई एम शेयरिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम द बेसिक क्वेश्चंस लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, एंड टेल मी about the projects which you have done। उसके अलावा ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत कॉमनली पूछे गए हैं मुझे जब भी मैंने इंटरव्यूज अटेंड किए हैं डेटा एनालिस्ट के एक्सेल के लिए, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप प्लीज 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 बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जाइएगा, सो दैट आपके एक्सेल की इंटरव्यू आप इजीली क्रैक कर सको जो भी जिस भी रोल के लिए आप जा रहे हो। सो the first question is, what are the most commonly used Excel functions for data analysis? So the first one is VLOOKUP and HLOOKUP. So ये दोनों आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। इसके बाद में इंडेक्स प्लस मैच फंक्शंस आपको सीख के जाना है। सम इफ, काउंट इफ एंड एवरेज इफ is the very important function for conditional analysis. So you'll definitely have to learn it. And text, left, right and mid, this are used for text manipulations. तो ये आप सीख के चले जाना। If and or, these are the logical conditions which you have to learn for the Excel interview, and these are the very basic and very uh, commonly being used functions. So ये सारी बहुत important है। How do you handle missing or duplicate data in Excel? So this is the answer which you have to give. So you have to use filter or conditional formatting to identify blanks and duplicates. So basically first हम blanks and duplicates हटाएंगे filters and conditional formatting के through. Then we will remove the duplicates. So duplicates, you have to remove it from data, then remove duplicates. So once the duplicates have been removed, replace the missing values using the if formula or find and replace. So find and replace and if formula use करके आपको missing values fill करनी होंगी, and use Power Query for advanced data cleaning and transformations. So ये सारी टॉपिक्स के बारे में हम और आगे सीखने वाले हैं. So please stay tuned with me. And these are the very basic things which you have to learn if you are going for any data analyst job roles or anything which requires you to learn Microsoft Excel in advanced. Okay, so the third question is, explain the difference between absolute, relative and mixed cell references. So relative होता है changes when copied to another cell. So if you are copying one cell and you are pasting it to the other cell, it will change the references. So if you're copying it from A1 and if you're changing it to E1, then the reference will be changed from A1 to E1. And but if you are making it as constant like absolute, it remains the value and the address reference remains same. So it remains when you copy it, even if you copy it. And this is the mixed. So if either row or column stays fixed. So if you are giving us $1, so the one, I mean the column number will be one. It will remain same. Sorry, the row number will remain same whenever you are copying the references. And for $A1, the column will remain same. So even if you are pasting this $A1 value to any other cell, the cell reference will remain the same. ये सारी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ये आपको जरूर से सीखना पड़ेगा. एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ डू यू एनालाइज डेटा ट्रेंड्स इन एक्सेल? सो फॉर दैट यू नीड टू यूज charts such as line, column and bar charts. Then you have to create pivot tables for data summarization, and you have to apply conditional formatting to highlight the trends. And you can also use insert spark lines for quick trend visualization. Yeah, so all this you can do to analyze the data trends in the Excel. And the fifth question is, what are pivot tables and how do you use them? So मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था, what are pivot tables? तो जिसके लिए मैंने आंसर किया था, like pivot tables आपको बहुत जरूरी है जानना. पिवट टेबल्स, वी लुकअप, लुकअप फंक्शंस, ये सारी चीजें आपको बहुत
जरूरी से जानना पड़ेगा for cracking the Excel interviews. So pivot tables allow summarizing and analyzing large data sets easily. You have to insert the pivot table from insert pivot table and choose the data range, whatever data range you want to pivot into. And then drag fields to rows, columns, values, filters, areas. Use grouping, filters, and summaries for deeper insights. So basically, once you learn about pivot tables, you will be able to answer all these questions very clearly. But the most, I mean, more very important is like you have to be prepared to use these functions and pivot tables and charts, everything practically, so that whenever you're going for an interview, आपको ये सारी चीजें बाय हार्ट आनी चाहिए एंड आपको वहां पे प्रैक्टिकली भी करके दिखाने बोल सकते हैं तो इट्स नॉट जस्ट यूजिंग द टेक्निकल टर्म्स एंड मतलब आप सिर्फ बात करके उन्हें अगर समझा पाओ well and good, but if they are asking you to do it practically, then you will have to get ready, be ready, be prepared for all those practical interviews as well. So that's it from my side. Please let me know if you want to learn any other topics, and we will come back with other set of questions which has been asked for data analytics interviews. So thank you so much. Please like and subscribe. Thank you.